Hello my dear student, myself Amit Tripathi from SBS Children Academy, Argopur Kalan. You are welcome in my class. Guys, today we are going to discuss your science textbook and basically physics portion that is started from chapter number 10. The name of the chapter is Light, Reflection and Refraction. Guys, in the class we have already discussed about the what is the light, properties of light, reflection, different optical medium, classification of object on the basis of light, and next topic that is the mirror and image, some important definition related to spherical mirrors. So guys, before starting the mirror, I want to discuss, or I want to go back in previous classes lectures, that is the definition of light, what is the reflection of light, and what is the law of reflection of light. So basically we are going to start in quick fast way in these topics. The first is what is the definition of light. You all are know light is a form of energy which enables us to see the object, and there are some properties of light. The first one is light always travel in straight line. We have already discussed in your class. And light is an electromagnetic wave, therefore it does not require any medium for travel. Light has dual nature. The first one is the particle nature as well as the second is wave nature. Okay, and the last is the speed of light in vacuum is maximum, and the value is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, the second topic is what is the reflection of light and what is the laws of reflection of light. So guys, reflection of light, the topic is reflection of light. Okay, the phenomena of bouncing back of light after striking a smooth surface in the same medium, that is known as the reflection of light. There are two laws of reflection of light. The first one, if we describe the laws of reflection, suppose this is a surface, that means this is a reflecting surface on which the light is incident. This is the surface. A light which is come from a source point, this is the source point, and it is falls on this surface. This coming light rays which is falls on the surface coming from the source, that is known as the incident ray. This ray is known as the incident ray, and it falls on a surface, and after striking on this surface it will be reflect in the same medium, and this ray is known as the reflected ray. Okay, this point is known as the point of incidence. This is the point of incidence, and it is represented by small o, and we draw a line, that means normal line, which is perpendicular on the surface at a point of incidence. This perpendicular line is called normal. This is the simplest diagram of which represents the phenomena of reflection of light. We again describe it. A light is incident from a source on a surface. That light rays is known as the incident rays. Light rays which is reflect in same medium after striking the surface, that is known as the reflected rays. The point on which these two rays are meet, or these two rays are incidence and emergent, this is known as the point of incident, and we draw a normal line on a surface at a point of incidence. This is known as the normal. Okay, and one important thing is here, the angle between normal and the incident ray. Angle between normal and the incident ray
it is known as the angle of incidence. This is known as the angle of incidence. Okay, and the angle between normal and the reflected ray, this is represented by small r. This is known as the angle of reflection. Angle of reflection. Okay guys, so say there are two laws. Basically, reflection of light have two laws. The first one is incident ray. Incident ray, what is the definition of incident ray? The light coming from the source and striking on a surface, that light rays is known as the incident rays. And the reflected rays, what is the definition of reflected rays? The light bouncing back in the same medium after striking a smooth surface is known as the reflected rays. And the normal, what is the normal? A perpendicular line on the surface at a point of incidence, that is known as the normal. All lie in same plane. If you want to describe this first law, the incident ray, reflected ray, normal, all lie in same plane. This is the first rule. And second one is angle of incidence. Angle of incidence, that means angle between incident ray and the normal, that is known as the angle of incidence. This is angle of incidence is always equal to the angle of reflection. What is the angle of reflection? Angle of reflection means angle between reflected ray and the normal. This is known as the angle of reflection. This is the important rule for your examination. On this formula, on this rule, your CBSE board examination 1 marks question will come, and you will able to find the correct answer in this question with the help of this law. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay, if any light rays is perpendicularly incident on the surface, what happens, or what is the path of the reflected rays if a light rays is incident on the perpendicular of the surface? That means अगर कोई light ray आपकी perpendicular direction में आ रही है, perpendicular direction उस reflecting surface के exactly perpendicular incident हो रही है, then what is the path of the reflected rays? किस paths को follow करते हुए वो आपके light rays after the reflection वो reflect होगी? Suppose that ये आपका सरफेस है और इस पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हो रही है। गाइस, तो मैं आपको बता दूं, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द normal is known as the angle of incidence, is always equal to the angle between normal and the reflected ray, that is known as the angle of reflection. तो गाइस, ये नॉर्मल पे ऑलरेडी एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल को रे को नॉर्मल लाइन को ही फॉलो करते हुए आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। दैट मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज 0। दैट मीन्स फिर आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही आपका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ शो करेगा फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो आपकी रिफ्लेक्ट भी होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों का एंगल क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइट रे आपके सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इट मीन्स द लाइट रेज विल रिफ्लेक्ट टू फॉलो द सेम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। दैट मीन्स जिस पाथ से आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी उसी पाथ से आपकी लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट भी सेम मीडियम में होगी। गाइस, ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ ए लाइट रेज इज फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, व्हाट इज द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज? योर आंसर इज इट फॉलो द सेम पाथ ऑफ द लाइट ऑफ इंसिडेंस रे। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इमेज। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। You all always see your image in a mirror when you come in a school or when you go in a function. How much you are looking handsome, how much you are looking smart, how much you are looking beautiful. So you will use a mirror. That mirror is known as the plane mirror. This plane mirror is for your image in the mirror at a same structure as like you will appear. Okay, then what is the definition of image? How you define the image? Okay guys, the definition of image: when a light ray
is coming from a point source, and after reflection these light rays, that means reflected light rays, is appears to meet or exactly meet at a point. This meeting point is represents the image of that point object. There are two types of image on the basis of exactly meeting point and appear to meet at a point. That means if the light rays, reflected light rays is exactly meet at a point, this meeting point is form the real image of that point object, and if it will appear to meet at a point, this appearance meeting point is known as the virtual image of that point object. Real image is formed on the screen and virtual image is not formed on the screen. That means image formed on the cinema screen is the example of real image, and which image you will form by the plane mirror. That means your image, when you see in front of, when you stand in front of a plane mirror, the image, your image will form in that plane mirror. That image formed in the mirror is known as the it is the example of virtual image. Okay guys, so that means there are two types of image. One is the real image and second one is the virtual image. Real image example, image formed on the cinema screen. Virtual image, that means image formed by the plane mirror. Okay, next topic, that is the mirror. Mirror is the polished surface which reflect almost all the light which is incident on the polished surface or which is incident on the surface. That means mirror is a type of polished surface which reflect all the incident light rays. There are two types of mirrors. The first one is plane mirror and second one is spherical mirror. Okay, so first we discuss what is the plane mirror. A such type of mirror, a such type of mirror whose reflecting surface is plane, that means or straight. This type of mirror is known as the plane mirror. और बेसिक एग्जांपल इसका आप जो अपने डेली लाइफ में आप ड्रेसिंग रूम में अपने या आप अपने बाथरूम में मिरर यूज़ करते हैं, वो मिरर आपका होता है प्लेन मिरर. ओके, एंड सम बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशंस. दीज आर द फर्स्ट वन इज the image formed by plane mirror is virtual. That means the nature of the image formed by the plane mirror is virtual nature. Okay, the second one is focal length of plane mirror is infinite. Okay, what is the meaning of focal length? This is the new word for you, that is focal length. So guys, this word we will discuss when we taught you the spherical mirror and important definition related to the spherical mirror. वहाँ पे हम आपको बताएंगे what is the meaning of focal length of the mirror. Okay, next one, the height of
the image is equal to the height of object. That means plane mirror always form the same size इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितनी लेंथ का, जितनी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही हाइट की इमेज आपके प्लेन मिरर में फॉर्म होती है. ओके, एंड नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is always equal to the distance of image from the mirror. The distance of the object from the mirror is always equal to the distance of the image from the mirror. That means suppose that अगर ये आपका मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से इस प्लेन मिरर के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी, इमेज जो ये प्लेन मिरर फॉर्म करेगा बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स जो आपका इमेज फॉर्म होगा उसकी भी डिस्टेंस वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा. अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज की भी डिस्टेंस 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ही डेफिनेटली होगा. ओके गाइस, एंड द नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन mirror is laterally inverted. What is the meaning of laterally inverted? The image formed by the plane mirror is laterally inverted. What is the meaning of this word laterally inverted? Guys, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप अगर प्लेन मिरर के इन फ्रंट में आप स्टैंड होंगे तो आपकी इमेज प्लेन मिरर बनाएगा, और उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उस इमेज में राइट हैंड साइड सीन्स होगा. दैट मीन्स राइट हैंड साइड अपीयर होगा, और सिमिलरली आपका राइट हैंड साइड उस इमेज में लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड सीन करेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रियल में जो आपका है वो आपकी इमेज में राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा, और आपकी रियल में जो राइट हैंड साइड है वो इमेज में लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा इन द इमेज. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. वंस अगेन आई वांट टू रिपीट इट. द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर is virtual in nature, that means here we write. And second one is focal length of the plane mirror is infinite. Height of the image, that means size of the image, is always equal to the size of the object. Distance of the image from the mirror is always equal to the distance of the object from the mirror. And image formed by the plane mirror is laterally inverted. These are the important properties of image formed by the plane mirror, and this is the important, ये प्रॉपर्टीज़ आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती हैं. राइट द प्रॉपर्टीज़, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ और 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. ओके गाइस, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, दैट इज द स्फेरिकल मिरर. देन व्हाट इज द मीनिंग और हाउ यू डिफाइन द स्फेरिकल मिरर? द सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, दैट इज द स्फेरिकल मिरर. एंड आपके घरों में स्पून होगा और उस स्पून का आप यूज़ करते हैं खाने के लिए. गाइस, उस स्पून के स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए तो स्पून का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा. ये देखिए, ये आपके स्पून का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको मिलता है. ये आपका स्पून है जिसका यूज़ आप अपने घरों में करते हैं. ठीक है, तो इस स्पून को देखिए और इस स्पून को आप अपने पास लीजिएगा और स्पून के
फेस, अपने फेस को स्पून का जो ये सरफेस आपको मिल रहा होगा, ठीक है, इस सरफेस के सामने आप ऐसे रखिएगा तो उसमें भी आपको इमेज का फॉर्मेशन, दैट मीन्स आपकी इमेज, आपके फेस का इमेज उस स्पून में दिखेगा। और फिर आप उस स्पून को ऐसे एक बार आप टर्न करिएगा, उसका जो सेकंड सरफेस है उसको उसके साथ बिल्कुल फ्रंट में अपने फेस को करिएगा तो उस पर भी आपको इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। और दोनों इमेज में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है ये आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके गाइस, तो हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप जब आप इस सरफेस को देखेंगे, दैट मीन्स आपका ये अगर फेस होगा, ये आपका फेस है, दैट मीन्स ये आप हैं, ठीक है। तो ये आप है तो आपका स्ट्रक्चर, आपका ये फेस, इस फेस का इमेज इस स्पून में मिलेगा। और जब आप इसको टर्न कर देंगे, दैट मीन्स अब आपका फेस यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपका फेस है और आपका फेस यहाँ आ गया। तो अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। दोनों इमेजेस में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और अपनी कॉपी में नोट करके हमको सेंड करिएगा। ओके गाइस, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वे गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। दैट मीन्स इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, if the reflecting surface is curved either inward direction or outward direction, this type of curved surface or this type of reflecting surface is known as the spherical mirror. Guys, there are two possibilities: either reflecting surface is curved inward direction and or it is curved in outward direction. On the basis of this, we have classified this spherical mirror in two types. The first one is concave mirror and second one is the convex mirror. That means there are two types of spherical mirror. The first one is the concave mirror and second one is the convex mirror. First is concave mirror and second is convex mirror. Okay guys, so first we are going to define what is the concave mirror. Concave mirror, that means your reflecting surface is either curved in inward direction or outward direction. This surface is known as the spherical mirror. That means one is the one curved surface either inward or outward. That means which either inward or outward is known as the convex and second one is the convex. So that means first we defined what is the concave mirror. The reflecting surface is curved if in inward direction. That means this is the figure of concave mirror. This is the concave mirror. ये सरफेस जो हमें रिप्रेजेंट किया है, इसे यहाँ पे एक लाइन स्मॉलेस्ट ड्रॉ की है इस सरफेस पे। ये सरफेस आपकी पॉलिश्ड सरफेस होगी और इनवर्ड सरफेस, दैट मीन्स ये सरफेस जो आपका होगा, दिस सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस डायरेक्शन में है? कर्व है. ये है कर्व्ड इनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन. That means if the reflecting surface is curved inward direction, this surface is known as the concave mirror. Okay, this is the figure of concave mirror. And then what is the convex mirror? The second one. यहाँ पे आपने यूज कर लिया क्या? इनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, such type of surface or such type of mirror is known as the convex mirror. This is the reflecting, this is the polished surface and this is the reflecting surface. This is the reflecting surface and direction of curve is, this is curved in outward direction. ओके गाइस, ये जो टॉपिक है इसका स्टडी आपने लोअर क्लासेस में भी कर रखा है. व्हाट इज द मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना आपके माइंड में सेट करना है. इफ़ द मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द concave mirror. If the reflecting surface is curved in outward direction, such type of spherical mirror is known as the
convex mirror. Okay, and there are another name of the concave mirror and the convex mirror. Concave mirror is known as the converging mirror. This mirror is also known as the converging mirror. This is the important point. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ concave mirror or which mirror is known as the converging mirror? And second one, the convex mirror is known as the diverging mirror. This is known as the diverging mirror. Okay, what is the meaning of converging and what is the meaning of diverging? Guys, converging means किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना, किसी एक पॉइंट पे फोकस करना. इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम इस फिगर को फिर से एक बार रिप्रेजेंट करें तो ये देखिए कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व है इनवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स इफ एनी लाइट बीम इज कमिंग पैरेलल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी मीट एट ए सिंगल पॉइंट. दैट मीन्स अब ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही पॉइंट से पास होंगी. दैट मीन्स ये देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे पॉइंट आपकी एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं. इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, जिसका हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं और रिफ्लेक्टेड रेज सब के सब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. दैट मीन्स सारी की लाइट को ये क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है. इट हैव द प्रॉपर्टी, इट हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्स द ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस spherical mirror. That's why it is known as the converging mirror. And simply here in the case of convex mirror, convex is known as the diverging mirror. That means ये सारी लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है. सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी. ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं, ये देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है. तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी लाइट रेज हैं इन सबको क्या करेगा, डाइवर्स करेगा. डाइवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि इनकी लाइट रेज का जो रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ये देखिए इस तरीके से लाइट रेज इनकी क्या हो रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं. दैट मीन्स देर आर नो मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेज. दैट्स वाई इट इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर. ओके गाइज, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. ओके, थैंक यू.